acids, base and salt session 5. In last sessions children, we have learned about acids, base, salt, neutralization, indicators. These 5 important terms we have discussed. Then we have discussed about mineral acid, common base. Then we have discussed about indicators, natural indicators. Right children? Now we are continuing with neutralization in everyday life. Now how neutralization helps in our day-to-day life. It is very interesting also, and this children you can use in your day-to-day life also. So please remember these tricks for neutralization, because this can be helpful in your future also if you are facing some problems with indigestion, ant bites. Then you can learn about soil treatment, factory waste, right? So these 4 things we are going to cover, and how we can reduce the acidic or basic nature of this type of problems, right children? So let's start with the discussion. First is neutralization in everyday life. There are so many complications in our day-to-day life. We have to face so many problems, right? So one problem first is indigestion. Now see children, we like to eat so many types of food. Though it is unhealthy, then also we like to eat, right? सब खाना healthy नहीं होता है. Unhealthy खाना भी हमें खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते हैं. Right children? So indigestion is one of that thing. Now what happens in indigestion? Our stomach contains hydrochloric acid. Okay, what is present in our stomach? Hydrochloric acid, and it is naturally present, right? We are not drinking hydrochloric acid to maintain the balance in our body, right? But hydrochloric acid is naturally present in our stomach. It helps us to digest food. Now what is the purpose of hydrochloric acid in our stomach? It helps us to digest the food. But too much of acid in the stomach causes indigestion. If this increases, what will happen? Indigestion will be there in our body. Now to relieve this indigestion, we take an antacid. Okay, we used to take an antacid. This antacid helps us to neutralize the acidic increase in our stomach. Now this antacid is found in the form of milk of magnesia. Right children? It is found in the form of milk of magnesia. It neutralizes the effect of excessive acid. यानी हम जो खाना खाते हैं, राइट, और उससे जो एसिड लेवल हमारे स्टमक का इम्बैलेंस होके बढ़ जाता है, तब हमें इंडाइजेशन होता है. और वो इंडाइजेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंटासिड यूज करके. और ये एंटासिड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट. जेलोसिल करके सिरप आते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं मार्केट में, और वो सिरप हम 2 ही स्पून पिएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो एसिड बढ़ गया है वो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कॉमन बेस. दैट आल्सो वी हैव स्टडीड. So this neutralizes the effect of excessive acid. So this was about what we say indigestion. Next we are going to see is ant bites. When an ant bites, it injects the acidic liquid. यानी जब भी हमें चींटियां या तो फिर कुछ इंसेक्ट काटते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके बॉडी के अंदर का जो एसिड होता है वो बाइट करके स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वो डालते हैं, राइट. सो दैट एसिड इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड. ओके, सो एंट्स आर गिविंग आउट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन. वो हमारे स्किन के अंदर एंटर होता है. इट कैन बी न्यूट्रलाइज. अब हम इसे कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाय रबिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा तो कॉमनली हमारे घर पे होता ही है, तो बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना के उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो. सो दिस विल reduce the effect
effect of formic acid. Second is calamine lotion. Calamine lotion भी mostly सबके घर पे होता ही है, right? So that will also reduce the effect of formic acid when there is an ant bite, right children? Next is soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic. यानी chemical fertilizers हमारे body के अंदर जब बढ़ता है, right? Chemical fertilizers जब soil के अंदर increase होता है, right children? So तभी क्या होता है? Soil acidic हो जाती है. So इससे क्या होता है? Crops अच्छी तरह grow नहीं हो पाते हैं. So what happens? It is treated with the bases like quicklime. तो उससे बैलेंस करने के लिए हम एक बेस यूज करते हैं, that is quicklime, that is calcium hydroxide, right? क्योंकि हम जो खेती करते हैं वो पूरे साल के लिए करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक क्रॉप ग्रो करने के बाद सॉइल को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके लिए, तो उससे क्या होता है, सॉइल एसिडिक नेचर के हो जाते हैं. तो जब भी दूसरा क्रॉप हमें ग्रो करना है तो उसके पहले सॉइल को पहले हमें न्यूट्रलाइज करनी है, अदरवाइज नेक्स्ट क्रॉप आल्सो विल बी स्पॉइल्ड इफ द सॉइल इज बेसिक. कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल एसिडिक नहीं होती है लेकिन बेसिक हो जाती है, तो भी हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड कंपोस्ट फर्टिलाइजर, राइट? तो हम कंपोस्ट ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीजेस एसिड, तो उससे क्या होगा, एसिड रिलीज होंगे और बेस और एसिड बैलेंस करके वो सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी, एंड दिस विल हेल्प टू ग्रो द क्रॉप्स इन प्रॉपर वे. सो बोथ द थिंग्स शुड बी बैलेंस. वो कम भी नहीं होना चाहिए, एसिड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और बेस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो एसिड अगर बढ़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, क्विकलाइम. बेस अगर बढ़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट. सो प्लीज रिमेंबर दिस चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड. अब फैक्ट्रीज क्या करती है, सब चीज का प्रोडक्शन करती है, बहुत सारी चीजें बनाती है, तो उसके लिए वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग में वो लोग वाटर भी यूज करते हैं, और वाटर के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसका जो वेस्ट होता है उसके अंदर ज्यादा एसिड्स होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. दे आर यूजिंग केमिकल्स फ्रीक्वेंटली इन प्रोडक्शन. सो इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अब ये वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में जाने देते हैं. तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसे अगर हम पानी के साथ ओशन या सी में फ्लश करेंगे तो फिर क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है लाइक फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैन डाई, क्योंकि ओशन और सी के अंदर फिश भी होते हैं, अलग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, तो वो सबको ये एसिड इफेक्ट करता है. सो द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. तो उसे जब हम लोग फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं वाटर बॉडीज में, तो उसके पहले उसे बेस उसके अंदर ऐड करके उसके बाद ही उसे फ्लश करना चाहिए. सो दिस विल help to maintain the acidic content which is present into the factory waste, and it will neutralize, and after that it will not harm the water bodies, right? So now we are going to see one example of neutralization reaction. Hydrochloric acid plus NaOH. So HCl plus NaOH, that is hydrochloric acid plus sodium hydroxide, will give you salt and water, right? So when these two components are mixed, the output will be salt and water. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कोई भी दो बेस या एसिड मिक्स किए जाते हैं, तो उसके आउटपुट में हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, right children? So with this we complete our chapter. In next sessions we will start discussing the solution of chapter number 5. Thank you and have a nice day children.